Good morning, students. Here you can see the flow chart of nationalist movement 1870 to 1947. With the help of this flow chart, we can easily learn the chapter. Through these steps, we can learn the different incidents or movement of the nationalist movement. The first step is the formation of Indian National Congress. It happens in 1885 and it was formed by A.O. Hume. Okay, the another step is partition of Bengal. We all know that Britishers divided Bengal into two parts, Eastern Bengal and Western Bengal, in 1905 to divide the Hindu and Muslim unity. Okay, so the next one is formation of Muslim League 1906. They formed the Muslim League, not directly but in an indirect way. They encouraged Muslims to form their own organization and to Aga Khan and Nawab Salimullah of Dhaka formed Muslim League in 1906. Okay, the next is Morley Minto reform. To pacify Indians, they announced Morley Minto reforms. In this reform also they did not give any importance to Swaraj, as the Indians demanded Swaraj, but Britishers pay no heed to the demand of Swaraj. Muslims were granted separate electorate, separate representation, and for this only Muslims could participate in the election and Muslim could vote for them. This was the main point of Britishers to divide and rule. ये मेन पॉइंट था जो इंडियंस में फूट डाल रहा था, हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड कर रहा था. ओके, moderates opposed it and just move on to the स्वराज डिमांड. ठीक है, वो स्वराज की डिमांड की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे थे एंड दे ओपोज दिस Morley Minto reform. Next is Home Rule League. Home Rule League started by Annie Besant, Mrs. Annie Besant. She was an Irish lady and she started it in 1916. 1916 में होम रूल लीग एस्टैब्लिश की गई इन मद्रास एंड इन बॉम्बे इट वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक. ओके, Britishers tried to stop this movement, tried to crush this movement, but the agitation continued. The next is Lucknow Pact of 1916. Lucknow Pact of 1916 means the Lucknow session of Congress, and in this session moderates and radicals reunited to strengthen the national movement. After 9 years, they came together, they worked together for the freedom of our country. Muslim League also joined hand with Congress for the independence or for the self-rule. At that time, Mahatma Gandhi came to India and he participated in nationalist movement. He introduced non-violence. He introduced non-violence
which was called सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह. Okay. He established Sabarmati Ashram in Gujarat, where people of all caste and religion were welcome. He was against violence. He propagated tolerance, brotherhood, non-violence. उन्होंने हमेशा अहिंसा का साथ दिया, भाईचारे का साथ दिया और टॉलरेंस की बात कही. His first movement was for peasants of Bihar. Those who struggled for the proper amount, for the proper cost of their crops. He forced the British government to increase the price of indigo for the benefit of peasants in 1917. 1917 में चंपारण में बिहार के पीजेंट्स के लिए उन्होंने वर्क किया था और ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि वो इंक्रीज करें प्राइस को इंडिगो के. बाय 1919 गांधी जी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया. ओके. द नेक्स्ट इज Montagu Chelmsford Reform or Government of India Act 1919, means these both the movements was done in 1919. Montagu Chelmsford Reform was also the reform in the administration of Britishers in India, and this reform increased the number of elected members in legislative assembly. इस रिफॉर्म के अंडर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उनकी नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो गए और नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर. पावर में कोई चेंज नहीं हुआ. स्टिल द पावर इज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस गॉट वेरी लेस पावर्स. द important subjects like finance, police were under the control of governor. Okay, so Montagu Chelmsford reform was nothing but just to satisfy the Indians that they got power in their hand. Indians have only the education and health departments. Okay, so real power was still in the hand of British officials. This disappointed the Indians. And at that time there was an act. Britishers introduced an act, that is Rollt Act. Which act? Rollt Act of 1919. Okay. एक और एक्ट बनाया उन्होंने 1919 में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट एंड इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल. इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी और किसी को भी विदाउट ट्रायल, विदाउट कुछ, बिना पूछताछ के, विदाउट वारंट जेल में डाल सकती थी. ओके. रोल्ट एक्ट वॉज नोन एज ब्लैक लॉ, एज नो अरेस्टेड पर्सन वॉज अलाउड टू गो फॉर आर्ग्यूमेंट एंड लॉयर. दे डिडंट हैव द राइट टू गो फॉर अपील, आर्ग्यूमेंट और लॉयर. इट इज़ कॉल्ड अपील, दलील एंड वकील. कि ना तो वो अपनी बात सामने रख सकते थे, ना ही कोई बहस कर सकते थे कि हमने ये किया है या नहीं किया, और ना ही कोई लॉयर हायर कर सकते थे, कोई एडवोकेट अपने लिए रख सकते थे जो उनकी बात सामने रख सके. सो द इंडियंस हैव नो पावर अगेंस्ट दिस रूल. पीपल वर अगेंस्ट दिस रूल एज इट वॉज जस्ट एक्सप्लॉयटेड इंडियंस. इंडियंस को कभी भी जेल में डाल देना, इट इज़ नॉट
proper way to rule over a country. So they just started demonstrations and hartals across the country. Indian people started hartals. ठीक है. So next is Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh massacre. At that time, people were protesting peacefully in Jallianwala Bagh on April 13, 1919. अप्रैल 13, 1919 में जलियांवाला बाग में लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात को सामने रख रहे थे, एक अपोज कर रहे थे ब्रिटिशर्स को फॉर दिस रूल, बिकॉज British government arrested two leaders of Congress that were Dr. Satyapal and Saifuddin Kishlu. Okay, and the people of Punjab were against this and they just protesting against this arrest. Okay, General Dyer ordered the British armed force to open fire at hundreds of innocent unarmed men, women and children. There were so many people in the Jallianwala Bagh because it was the occasion of Vaisakhi and there was a fair. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो gathered थे and General Dyer gave order to its army to fire on them. And in this, many people were killed. And this massacre stunned the whole country. पूरी country इसमें बहुत ज़्यादा सकते में आ जाना, यानी कि बहुत परेशान हो जाना कि ये ऐसा क्या हो गया जो इनोसेंट मैन, वीमेन और पीपल, चिल्ड्रन पर फायर किया गया है. ओके, आफ्टर दिस massacre द गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ. गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज किया. अंडर दिस लॉ they tortured the people and newspaper, letters, each and everything banned. लेटर्स को भी सेंसर कर दिया गया. लेटर्स को चेक किया जाता था किसी के घर भेजने से पहले, और अगर कोई रॉन्ग मटेरियल प्रोवाइड होता था तो वहाँ पर उसे विदाउट एनी वारंट जेल में डाल दिया जाता था. ओके, तो जलियांवाला बाग मैस्केयर के बाद मार्शल लॉ पूरी कंट्री में इम्पोज कर दिया गया.